अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब दोस्त? तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जी बांग्लादेशी इकॉनमी के बारे में। जिसकी जुबान पर देखो बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। आखिर बांग्लादेश ने ऐसा क्या कर दिया जी? हर बंदे की जुबान पर ही बांग्लादेश है। तो आपको बताते हैं कि बांग्लादेश जो है वो नेक्स्ट राइजिंग टाइगर बनने वाला है, बल्कि बन चुका है, ऐसा कहेंगे बन चुका है। और बांग्लादेश ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत जैसे कंट्री को भी पछाड़ कर रख दिया और पीछे छोड़ दिया है। पर कैपिटा इनकम की बात करें या ओवरऑल हम इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें, कोई भी चीज़ या कुछ भी बात कर लें, टू द पॉइंट बात यह है कि हम इकोनॉमी के रिलेटेड कोई भी बात कर लें तो इस पूरे खिते में साउथ एशिया या एशिया की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश ऐसा वाहिद कंट्री है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और पूरी दुनिया इस वक्त बांग्लादेश के गीत गाती हुई गुनगुनाती हुई नजर आती है। उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? आज एक वीडियो जो आपके साथ देखेंगे, जो शेयर करेंगे, वो है बांग्लादेशी इकोनॉमी के हवाले से और उसका टाइटल है बांग्लादेशी इकोनॉमी नेक्स्ट एशियन टाइगर। अच्छा जी, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंग्लिश में ये वीडियो है तो पूरा देखिएगा। आई होप कि आप लोग इंजॉय करेंगे इस वीडियो को, और जो हमारे बांग्लादेशी भाई हमें देखते हैं वो तो डेफिनेटली प्राउड फील करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो बिना कोई देर किए। वीडियो का ओरिजिनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो चैनल को जरूर This is विजिट कर Bangladesh, लीजिएगा। the country which was once called a basket case, now being one of the fastest growing economies in South Asia. Just not this, it is even outperforming some of the big players in the region. This country has seen unprecedented growth in the past decades, with average economic growth of 7% in the last 11 years. Their GDP rose from 100 billion in 2009 to almost $303 billion in 2019. That's a massive 200% increase in 10 years. So how the Bangladesh economy is growing so fast? And is this the next Asian tiger economy? Well, let's find out. The country has a very rough history. In 1971 they got independence after a lot of struggles. Still, things weren't that good. After independence, the government simply did not have the ability to meet the basic needs of their citizens. And to make things worse, in 1974, just after the independence, a famine struck the country. According to some estimates, it took 1.5 million lives. In addition, political instability and military coups worsened the economic growth. The industrial growth was also slow, and there were many reasons for that. Like the War of Independence, which had crippled the transportation system. Hundreds of road and railroad bridges were destroyed or damaged. And rolling stock was inadequate, and in poor repair. Now, even though Bangladesh had a large workforce, the vast reserves of undertrained and underpaid workers were largely illiterate, unskilled, and underemployed. In addition, the government implemented socialist policies. Under this, they nationalized much of the industrial sector, which further resulted in inefficiency and economic stagnation. So, in order to get good productivity and efficiency, the government gradually gave greater scope to private sector participation in the economy. Many state-owned enterprises like banking, telecommunication, aviation, and some others were privatized. But among all, there was one particular industry that gave massive growth to the Bangladesh economy. Yes, that was the garment industry. If you visit the world's best shopping places to buy garments, then there are good possibilities that you are buying made in Bangladesh ones. The country has become the second largest manufacturer of ready-made garments. It is their main item of export, which accounts for 84% of their total exports. You see, Bangladesh has a massive labor force. It is the 8th largest in the world. And because of this, they are able to capitalize upon low-skilled labor, to create ability in the labor incentive export industries. This is the same principle followed by most of the Asian nations for their industrial sector, specifically for manufacturing. Today, the garment industry in the country provides direct employment to 4 million workers, and indirect employment to nearly 10 million people. Also, 80% of workers in this industry are women. This has a good impact on women empowerment in the country. Yes. Plus, the country's garment industries are benefited from custom-free access to many Western countries. Yes. This is because many foreign countries remove the export duties for least developed countries. This also helps making their products more competitive. Another major pillar to the Bangladesh economy is remittance. Remittance is the money that workers who work in another country send back to their home.
In 2019, nearly 10 million migrants sent over 18 billion US dollars in Bangladesh. This is nearly 7% of their total GDP. This has created a steady flow of foreign currency in the economy. A World Bank report found that households where a member is working abroad have higher savings and income. It showed that their monthly income and savings were on average 82% and 107% higher respectively than normal households. Research has also shown that remittances have made a positive impact on the Bangladesh economy. Now, as you know, everything has good and bad sides. Yes, we all agree that Bangladesh has achieved good economic growth in a short period of time. But it does not mean that the same formula they have been using will be useful in the future. Many people have warned the government about their overdependence on the garment industry. In an event like a pandemic, where the demand of the garments is low, it will not only impact the garment industry, but also their entire economy. Just not this, their duty-free access to developed countries could end soon. That is because the country is slowly graduating from the League of Least Developed Country. So they will have to pay duties just like any other country. Plus, due to automation, many jobs in the garment industry are at risk. Some estimates show that 60% of jobs in the industry could fade away in the coming years. In addition, people working in this industry are underpaid, and they are working in unsafe conditions. So Bangladesh really needs to diversify its manufacturing sector to high-income jobs, in order to sustain the economic growth. This is happening, but at a slow pace. New ones like pharmaceutical and tech industries are making progress. Next, remittance. This has its own upwards and downwards. On one hand, remittances can be used for consumption and investment, which further stimulates demand for goods and services, as well as contributes to the financial development. On the other hand, it can create dependency on recipients, and cause real exchange rate appreciation. This adversely affects domestic production and export of the country. So high dependence on remittances is also not a good option for sustainable growth of the economy. All these challenges have a direct impact on the foreign direct investment in the nation. Last year FDI fell to 20%, which is bad for any developing country. Another major problem the country is facing is natural disasters. This is particularly hurting the agriculture and infrastructure of the country. The World Bank estimates that Bangladesh is one of the most expensive places in the world to build infrastructure because of its variability to natural disasters. It is estimated that natural disasters cost them nearly 2.2% of their GDP. And this cost is likely to increase in the future because of rising sea levels. So to get things in order, first Bangladesh needs to improve their policies for business. As of today, the country is ranked 168th out of 190 countries in Ease of Doing Business Index. This number is not so great, particularly for developing countries like Bangladesh. Along with this, they also need to focus on their infrastructure, which will also help to create more jobs in the construction sector, and provide good support to the growing industries in the country. These things could attract more foreign companies and investment. And it could help the country to move towards high-end manufacturing. Hence it will also help in diversification from the garment industry. Now, even with all of these problems today, Bangladesh is a decent destination for trade and investments. With GDP per capita of nearly $1,900, it had even outperformed some of the big players in the region. Also, the International Monetary Fund has ranked Bangladesh as the 44th largest economy in the world, in terms of nominal GDP, and 32nd in terms of purchasing power parity. At the end we can say, Bangladesh has came far ahead by making its way. And still has good opportunities in today's post-pandemic world. So, we can really expect some remarkable growth by the end of this decade. Still, it is better to ask, what do you think about this country? Will Bangladesh be the next tiger economy? Well, tell us in the comments below. ओके तो गाइस कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं और इस वीडियो को देखें तो इसमें उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं जिसको अभी मतलब बांग्लादेश को बहुत सी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश ने करनी है। ये जो है डेस्टिनेशन नहीं है अभी बांग्लादेश की, बांग्लादेश ने इससे आगे जाना है। और बांग्लादेश की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है अगर उसकी बात करें तो वो वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस
समझी जाती है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल जैसे कि डिसास्टर्स आते हैं, और अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली समझी जाती है। तो बांग्लादेश ने अभी यहाँ पर रुकना नहीं, बांग्लादेश ने वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करना है। जिस तरीके से अब देखें कि अगर गारमेंट सेक्टर की बात करें तो 80% वुमेन्स वहाँ पर वर्क कर रही हैं, जो कि वुमेन अगर एम्पावरमेंट की बात करें तो वेरी गुड। लेकिन इन फ्यूचर जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, तो हम मशीनरी काम हो रहा है, ऑटोमेटेड मशीनें आ रही हैं, हर चीज़ जो है ऑटोमेटेड पर जा रहा है, तो बांग्लादेश को इसके ऊपर भी साथ साथ तवज्जो देनी पड़ेगी और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और काफ़ी चीज़ें हैं जहां पर बांग्लादेश को भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो जिस तरीके से पिछले, अगर हम एक दहाई की बात करें, पिछले 10 सालों से जो बांग्लादेश ने दुनिया को दिखाया है, जो बांग्लादेश ने अपने आप को मनवाया है, जो अपनी पावर दिखाई है कि फ्रॉम द बॉटम टू स्काई, ये कहेंगे कि अर्थ टू स्काई, के ज़मीन से या ज़मीन से आसमान पर बांग्लादेश किस तरीके से पहुंचा है, तो बांग्लादेशियों की मेहनत है। और बांग्लादेश जो है वो, अगर हम रिमिटेंसीज के ऊपर बात करें तो सिर्फ रिमिटेंसीज के अलावा भी बांग्लादेश को जो है वक्त के साथ साथ अपने हालात ऐसे बनाने होंगे, वक्त के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बनाना पड़ेगा कि वक्त के साथ चला जा सके। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश चल रहा है, आपकी क्या राय है? आपने ये बताना है कि क्या बांग्लादेश नेक्स्ट एशियन टाइगर बन रहा है? अगर मेरी बात करें, मुझसे आप पूछें कि मेरी क्या राय है, तो मैं कहूँगा यस, बिल्कुल, कि बांग्लादेश ने करके दिखाया है। जिस तरीके से बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश बिल्कुल बॉटम से उठकर ऊपर आ सकता है, तो इस टाइम तो बांग्लादेश हाइट पर है और इससे हाइट से ऊपर जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बांग्लादेश के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, वो काम करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, और किस तरीके से मेहनत करनी है, कैसे अपने आप को मनवाना है। और बांग्लादेशियों की सबसे जो अच्छी आदत है, जो अच्छी हैबिट है, वो ये है कि वो किसी भी काम में शर्म महसूस नहीं करते। मतलब उन्होंने कुछ भी करना है तो उनको शर्म नहीं है, मतलब किसी काम करने में, और किसी काम में होनी भी नहीं चाहिए। हर बंदे ने कुछ ना कुछ करना होता है, तो कोई भी काम करो। ये बांग्लादेशियों का जो है सबसे अच्छी आदत ये है कि उनके लिए काम काम है, वो कुछ भी हो, वो कोई भी काम हो, वो काम को काम समझते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी, मैं कहूँगा कि एक की ऑफ सक्सेस है कि वो अपने काम को काम समझते हैं और अपना काम करते हैं। और इस तरीके से अगर बांग्लादेशी चलते रहे और अपने आप को, गवर्नमेंट ने जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ प्रोवाइड कर दिया, तो डेफिनेटली बांग्लादेश को नेक्स्ट एशियन टाइगर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी, आप लिख लें, ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, 10 साल बाद आप खोल कर देख लीजिएगा कि मैंने क्या बोला था और मेरे अल्फाज क्या थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, शुस्तो थाकुन, भालो थाकुन।